Namaste, Salam, Sat Shri Akal. Welcome to my channel Astro Learning. In this video, I am going to explain you 10th house. So 10th house is house of career and profession. Your area of occupation is defined by the planetary placement in this house. So ये जो हाउस है ये करियर और प्रोफेशन का है और कौन सा प्लैनेट है आपके हाउस में वो डिफाइन करता है आप किस ऑक्यूपेशन में होगे. Your connection with people of higher ranking position and power is also ruled by 10th house. It also governs your earning capability. Your highest achievement and desire to achieve heights also comes under the domain of 10th house. So 10th house gives you give all the answers like what would be your line of work, whether you would be successful, what career mistake you could make, whether you would be an employer or employee. तो ये जो 10th हाउस है ये हमारे उन सभी सवालों के जवाब देता है कि आपका वर्क ऑफ लाइन कौन सा होगा, कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, या फिर आप कौन सी गलतियां कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर होगे या एम्प्लॉई होगे. ये सब हमें पता चलता है 10th हाउस से. सो 10th हाउस इज हाउस ऑफ नेम फेम. Whether you become a popular face and earn fame is also governed by 10th house. It shows the bigger picture, your ultimate career goal and the professional hard work you make to reach there. तो ये जो हाउस है ये नेम फेम का भी हाउस है. क्या आप पॉपुलर फेस बनोगे, नेम फेम अर्न करोगे, ये सब हमें 10th हाउस से पता चलता है. आपका करियर गोल क्या होगा और उसके लिए आप कितनी मेहनत करके वहाँ पे पहुँचोगे उसका भी हमें 10th हाउस से पता चलता है. 10th house is the most important angular house. When it makes a combination with the 9th house, it forms the biggest Raj Yog, leading the native वर्ल्ड सक्सेस. ये अगर 9th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो राजयोग बनता है और ये आपको पूरे संसार की प्रसिद्धि दिलाता है. It is also called earth house. Earth means economy. So your financial prosperity and material strength also comes under 10th house. Like whether you are a hard worker, ambitious and determined person, or a lazy lad in disinterested in career matters also domain under the 10th house. So you are hardworking, एम्बिशियस, आप एम्बिशियस हो, हार्ड वर्किंग हो, डिटरमिन्ड पर्सन हो अपने करियर को लेके, या लेज़ी लेड हो या डिसइंटरेस्टेड हो अपने करियर में, इन सब का भी हमें 10th हाउस से पता चलता है. द बॉडी पार्ट 10th हाउस गवर्न इज नीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.